Good evening, friends. Welcome to the session. आज का दिन the way we planned in the morning, honestly, it worked out the same way. हमने देखा था कि just I'll also play the same session on my mobile. So what we saw was that 23,800 पे बहुत heavy call writing था. And multiple times अगर आप देखो तो market 23,800 तक गया, but ultimately it was not able to cross that. I think 3 से 4 टेस्ट हुए 23,800 के. So how many of you followed that? Give me either a yes or a no. 23,800. देखिए जैसे भी मार्केट आपका एक्सपायरी के आसपास ओआई बिल्डअप हमें दिख जाता है ना, तो मोरलेस एक अपसाइड या एक डाउनसाइड क्लैरिटी आ जाती है. विजय गागिया सेज यस. कल या परसों के बेसिस पे आज वेरी क्लियर था कि 23,800 का लेवल निकलना काफी टफ है. करीब करीब 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था कॉल का. Shabaki says yes. Okay. And market did remain the way we had seen it in context of OI distribution. So expiry is over. Now let's see अभी क्या लग रहा है market. So I have few questions. धीरज से सर 11 बजे के आसपास ट्रेंडिंग OI ने इंडिकेशन दे दिया था पुट्स का वैल्यू जंप करी थी. या वो शॉर्ट टर्म होते रहेगा, 10-15 मिनट का होते रहेगा. विल सी दैट. ओके. वो भी जो आज डिप आने वाला था ना धीरज, अगर आप 23,700 का स्ट्राइक देखो तो उसमें क्रॉसओवर आ गया था ना. जैसे 23,700 टूटा वैसे आपका 80 पॉइंट का एक डिक्लाइन आ गया था. सो दैट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस आप देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है सर. आपको रूल्स पता है, आपको ट्रेंडिंग ओआई पता, स्टॉको इनक्रेड मनी में वो ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल स्ट्राइक्स का. कीप ऑन डूइंग. Yes, crossover हुआ था. You are absolutely right. So those the participants who are joining us for the first time or not regularly, what we are talking about is the Stocko Increment Money Insta Options platform. जैसे ही expiry के 1-2 दिन पहले रहते हैं, or even on a daily basis. So we don't use too much of RSI and all those things. I think I'd never ever use it for day trading. I don't. Those are too lagging. So we use the leading indicators which are OI based and price action. So how are you enjoying it or not with our Stocko Increment Money Insta Options platform? I think clarity aa rahi hai sabko abhi. That's why I can make it out with your questions. Is my audio loud and clear? I have not attached my microphone today. If you want, I can, or else it's fine. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? AV is good. That's fine. Yeah. So I'll just share my screen and let's start the session. We had some chit chat, which is also important. खाली चार्ट देखेंगे तो बोरिंग भी हो जाता है. सी मैं ये ट्रैक कर रहा था 600. 1 सेकेंड, मेरा माउस दूसरी स्क्रीन में चला गया. आई डोंट नो हाउ टू गेट इट. Just give me a minute. Something has happened which I don't know what has happened. Let me figure it out because I'm not getting my mouse. एक बार इसको निकाल के देखता हूँ. Yes, now I got it. So I think I lost the sharing. I'll do it. Done. So again the sharing is on. So before we start, I'll read out the disclaimer. Whatever we are doing is this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So let's see, 19th of May. Now, there are very few things which we are going to see. And उसमें से सबसे पहले क्या है? सबसे पहले is our charts, price action. See, VIX will do it in the morning. In evening, we would just focus upon the price charts part of it.
सो आई गो टू निफ्टी। एक चीज मैं आपको जो कंटिन्यूसली बेसिस पे बोल रहा हूँ, निफ्टी अभी भी रेंज में, और रेंज में 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट एक वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। और देखिए एक चीज आप ध्यान रखो, ये 300 पॉइंट की रेंज में जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। So if I plot 50-day moving average on the price charts, then आपको आइडिया आ जाएगा भाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहाँ पे वो निकलेगा, तब जाके हम एक स्पाइक या थोड़ी अपसाइड देख सकते हैं। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में प्रेशर है। सो देखिए आज का हाई, हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस, today's high was also the 50-day moving average. So till we are not crossing this range on the upside, possibly we will see the pressure on the market continue. If we break the range, क्या बहुत बड़ा तेजी हो रहा? Answer is no. Just minor move up till this gap. But let's see how market closes above this. But ये 50 दिन का एवरेज क्रॉस करने के बाद एक बार तो आपको एक छोटा सा स्पाइक मिलता है। So 50-day MA is plotted, which is 23,743. देखिए दो बार सी अभी यहाँ पे आप देखो सर, देखिए यहाँ पे मार्केट ने 50-डे एवरेज फर्स्ट टेस्ट में क्रॉस कर गया, तो एक दो दिन तेजी हो गई। यहाँ पे भी 50-डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया, नीचे आया, यहाँ पे क्रॉस कर गया, 2 दिन तेजी हुई। बट अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखो ना मार्केट का, तो हो क्या रहा है, वंस इट ट्राइज टू क्रॉस दिस, वही हाई बना, रिजेक्शन मिला। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन फ्रॉम अ एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस, जो कि 50 दिन का 50 डेज मूविंग एवरेजेस है। अगेन आज फिर से एक रिजेक्शन मिला। आर यू ऑल गेटिंग इट? गिव मी यस और नो। यस। नाउ अगर ये रेंज टूटता है, तब जाके हम एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का बाउंस देख सकते हैं। और कंसोलिडेशन का पुल बैक कैसा रहता, अब वो भी एक बार देख लो। देखिए यहाँ पे भी हुआ था पिछले बार। सो प्रेशर है मार्केट में, उससे कोई इनकार नहीं है। बट देखिए एज अ ट्रेडर हो, अगर एक दो दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यू शुड पार्टिसिपेट विद स्टॉप लॉस इन प्लेस। सो अगर आप देखो यहाँ पे, लेट मी टेक द चैनल। देखिए ये भी कंसोलिडेशन था, 50-डे, ये भी एक कंसोलिडेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, और दोनों में एक चीज कॉमन था, 50-डे। देखिए कंसोलिडेशन टूटा, बट हम तेजी में नहीं आए थे उस टाइम, इफ यू रिमेंबर। वाई? बिकॉज मार्केट जस्ट फिल दिस गैप एंड केम डाउन। तो इस तरह यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है, और जहां पे ऐसा गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है। So is the pattern clear, everybody? We are into a consolidating pattern with a high intra-week volatility and a strong resistance at 50-day moving average. Yeah, everybody says yes. देखिए कंसोलिडेशन में होता क्या है ना, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में वोलेटिलिटी बोलते हैं, चॉपीनेस बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं, कॉल वॉट एवर नेम यू वांट, बट दैट्स द एस्टैब्लिश ट्रेंड बोल के कुछ नहीं है मार्केट में डे टू डे ट्रेडर्स के लिए। अगर रेंज टूटता है, तो जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के रखा 23,800, 850, वो ट्रिगर होंगे। जैसे यहाँ पे एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने आया था, एंड देन अगेन इट केम बैक। सो बी अवेयर ऑफ इट। 50 दिन का एवरेज टूट जाए तो एक बार एक स्पाइक आ सकता है। See, if anybody placed their stop loss as this gap, can you see triggered everybody's stop loss and then declined? Give me a yes. So ये सब मार्केट में होते रहता, be aware of it. I only got yes from Nanavati ji. I'm watching it on my mobile. What about other participants? Yeah, Shabaki says yes. अभिजीत से सर निफ्टी से ज्यादा सेंसेक्स वोलेटाइल होता है, सो लॉन्ग मूव कैन कैप्चर। देखिए वो आप पे है, यू कैन डू सेंसेक्स ऑल्सो, यस, नो डाउट अबाउट इट। ना यहाँ पे हम मैकेनिकल इंडिकेटर देखते हैं। मैकेनिकल इंडिकेटर में देखिए बीच के जो स्पाइक्स रहते वो आते रहेंगे। आई विल जस्ट चेक एमएसीडी। इंट्राडे में कोई यूज नहीं है, बट ईओडी चार्ट्स में देख ले। देखिए एमएसीडी ये सेल में है,
और नेगेटिव टेरिटरी में विच सेज दैट बाउंस और पुल बैक, लेट्स सी वेदर इट सस्टेन्स और नॉट। एक ये हो गया। दूसरा हम बोलिंगर बैंड्स डाल के देख लेते हैं, अभी 50 दिन का एवरेज निकाल देते हैं और 20 के साथ देखते हैं। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो आपका ये रेंज है ना काफी एटलीस्ट अभी बरकरार रहेगा। यहाँ का रेंज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज था, देन इट क्रैक्ड। अभी यहाँ पे कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5 डेज ही हुआ। सो एज अ ट्रेडर be prepared for a volatile trades, range bound trades, one day up, second day down. Let's see tomorrow whether it crosses or not. Or हमेशा 50 day, see how now you should approach this market. Your 50 day moving average, आपका 50 दिन का जो average भाव है, it should be there on your screen. Right? Some uses simple, some uses exponential. For me, both are fine. I'm not too much into simple and exponential. This is exponential, right? So make sure the 50-day moving average is there in front of your screen throughout the day. So that's Nifty, just a consolidation chal raha hai. Now let's see Bank Nifty. On the Bank Nifty side, अगर आप देखो तो Bank Nifty में काफी weakness है, 50 दिन एवरेज का भाव उसने छोड़ दिया। और today if you see Bank Nifty did not cross previous days high, उधर आसपास फिजल हो गया at the gap. So no, this is not 50, it is 9. So let me, मैं 50 दिन का एवरेज प्लॉट करता हूँ। 50 दिन इज वे अप हियर, क्या है कि यहाँ से ऐसा बाउंस आ सकता है, फॉर दैट वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन राइट नाउ। ओके, नाउ बैंक निफ्टी ने कल जो था वो लो टच करके एक बाउंस दिया था। सो अभी ये सपोर्ट ले लेते हैं। और सपोर्ट कैसे लेंगे, जो ये कैंडल है ना, देखिए सिंगल लाइन इज नॉट अ सपोर्ट। सपोर्ट के लिए आप रेंज यू मेक अ बैंड। So this low at the gap which created its your support for Bank Nifty. Got it everybody? Clear now how we mark the support? Yeah, we will learn something about techniques also in this session. I mean resistance where you should take. Number one, let's see the pattern first. Okay. So pattern में अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पे, why I'm not getting my channel? Yeah, there it is. So pattern में, if I take this high and a low, can you see clearly a channel is visible? सिमिलरली यहाँ पे भी एक चैनल था। देखिए चैनल अगर टूटता है तो एक दो दिन का स्पाइक आता है। सो टिल दिस चैनल इज नॉट ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड, द बायस फॉर द बैंक निफ्टी इज डाउन, इंट्राडे स्पाइक्स विल बी देयर। एवरीबody clear about this? So now the purpose of the channel, what I wanted to show you is over. So now this is the immediate support for bank nifty. Yeah, the platform which I'm using is Stocko Incred Money Insta Options trading platform, and this high is there, so it's a range. So let me take this entire thing. Generally, इतना बड़ा candle होता है, तो what we do is we take 50% of this candle and create a resistance. So this is how Bank Nifty is positioned right now. 54,000 और 53,000 के बीच में रहेगा, volatility देगा. Right now we don't have any signs. Let the channel break on the upside and then we can say there might be 1 to 2 days of spike. Currently we have no evidence whatsoever. See, either you can mark this channel or you can do a reverse channel. Take the lows, इसको reverse channel बोल, then collect it to the highs. Both are looking okay. But that's how Bank Nifty is. Everybody clear about both the indices, Nifty and Bank Nifty? Give me a yes. Yeah, I'm just looking at your questions. Today I'm not having the other screen, so मैं mobile में देख लेता हूँ. Yeah, Vijay Gagia says yes. Sarita says yes. Sarita, how was your day today? Struggle था कि okay था आज, Sarita? आप जो देख रहे थे सरिता वो इंडिविजुअल था. Make sure you watch both. And आफ्टर दिस हमको ओआई देखना है. अगर मैं निफ्टी में जाता हूँ, देखिए अभी तो एक्सपायरी हो गई, तो ये अपडेट होगा अभी कल, राइट? या तो हम यहाँ पे जाके ऑप्शन स्ट्रेटेजी में जाके देख सकते हैं ओआई स्टैटिस्टिक्स, विच इज नेक्स्ट वीक.
So we'll skip that. Oh, and let's go and check Bank Nifty, because Bank Nifty, if I see on my OI profile, right? So I'm having a bit of a problem in my net connection. Yeah, I'll just try to refresh. 2 minute दीजिए sir. Yeah, Sarita, how was your struggle? Why struggle, Sarita? Get a hang of things, na? Yeah. Just give me some time. I'm in a session. So I think my net is a bit slow today. So I may shut it down and let me see if I restart and I get it. Yeah. So TOTP is nothing but your authenticator on the Microsoft icon 914 881. Yeah, there I got it. Fine. So I'll go to now Bank Nifty spot, and in the Bank Nifty spot I'll check my OI profile. See in Bank Nifty अभी हमने जो देखा है वो ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखा है. अभी बैंक निफ्टी आप देखिए तो कॉल पुट में 54,000 पे यहाँ पे है सर सेलर्स बैठे. कैन यू सी दिस, देयर इज अ गैप आल्सो ओवर हियर, इट डिड नॉट क्रॉस. सो मैं इसको लेके चलता हूँ. डाउनसाइड में द लास्ट लो इज देयर, अगर हाई नहीं टूटता है तो लो टूटेगा, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है 53,000 पे. तो बैंक निफ्टी भी 53 और 54 के बीच में वॉलेटिलिटी देगा आपको. अगर लेवल्स टू लेवल्स आपको ट्रेड करना है, कैसे क्या डालना है, तो देन यू कैन कम एंड अटेंड द मॉर्निंग सेशन एट 8:45. अभी देखिए 60 मिनट्स चार्ट से यहाँ पे क्लियरली आप चैनल बना सकते हो. टेक दिस हाई, ज्वाइन दिस लो. आज चैनल ब्रेक नहीं किया, राइट. So if it breaks the channel, एक 500 पॉइंट का स्पाइक आ सकता है. We don't rule that out. Everybody clear on the pattern for Bank Nifty? Give me either a yes or a no, friends. Yeah, give me either a yes or a no. Shabaki. Sarita, I don't know where your struggle is. You message me struggle. Right. So first thing first, options data, Nifty. Okay, I'll just show you, Sarita, and all the participants. I'll just take few minutes. See, Nifty from here declined. There was a sharp decline in Nifty somewhere from here, right? See, if you see over here, I also keep on checking individual strike price, Sarita. If I go to options chart, अगर मैं 23,700 का strike लेता हूँ, can you see at 23,700 strike price, the crossover happened where? Call sellers became active at 14:33, 2:33 पे, and market cracked. And see, 2:33, 2:33 somewhere here, right? So which is exactly at this point, 2:33. So over here, can you see after when that came, if all the participants, that crossover, did you see Sarita, the market cracked? So this is Sarita and all the other participants, how to use trending OI individually. Other than that, अगर मैं full market का देखता हूँ, which is trending OI for Nifty today. So it clearly showed me right from 11:36 put writers were active till what time? 14:33. After that the sellers came in, call writers. So this also showed me good indication. Got it? So that's all from my side today, friends. I don't want to extend this session beyond the 15 minutes stipulated time frame, but since I had query to answer, I just took 3 minutes extra. Okay. So कल फिर सवेरे मिलते 8:45 in the morning. Over there we plan things at a micro level on a 5-15 minutes time frame charts. So ending the sessions, both the indices are range bound with strong resistance at or around the 50-day moving average. Let's see how market breaks the range up or down. Upside also resistance is too strong. So, and we will see such market condition for a day or two, and let's see after that whether it resolves in favor of
बायर्स और सेलर्स. देखिए निफ्टी में 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी और बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट की. इट विल कंटिन्यू इन दिस वे फॉर अ डे और टू. इंट्राडे मूवमेंट्स मिलेंगे आपको, and that's how markets have patterns are right now. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. Meet again tomorrow at 8:45 in the morning.